Now, my dear friends, we go into our next concept, and that is called as thermochemical equation. Okay, as the name suggests, when you talk about thermochemical equation. Now, what is a thermochemical equation is? In simple words, these are the equations which are balanced equations. As I already mentioned before, that whenever you talk about chemical reaction, it has to be balanced. So they are balanced equations which is going to be considered as a specification of enthalpy changes, the physical state, and the number of moles of the reactants as well as products. Okay, this is called as a thermochemical equation. Okay, so in simple words, thermo is all about heat. That means we talk about enthalpy. So the enthalpy changes taking place in a chemical equation is basically called as a thermochemical equation. Okay, it has to be balanced. Okay, and it has to contain the enthalpy change values. It needs to contain the physical state, and it needs to contain the number of moles of the reactants as well as products. Okay, so this is what we call it as a thermochemical equation. Now, there are some guidelines as far as the thermochemical equations are concerned. So let us go through those guidelines. So what are the guidelines are? Number one, as I said, the equation has to be balanced. That is number one. Number two is the PS. Now I guess you know it very well, smart students. PS means, yes, the physical state of all the reactants and the products needs to be mentioned. Okay, the physical state of all the reactants and products has to be mentioned. Next one is the value of delta HR has to be mentioned. Now, when I talk about value, it should contain a numerical value, okay? Or we also call it as magnitude. And it should contain what? Sign. And all these has to be written on the right hand side of the reaction. Okay, the value of the enthalpy of the reaction, which contains a numerical value, that is nothing but it's called as a magnitude. This will suggest about the amount of energy, and when you talk about sign, it can be either positive or negative. So accordingly, we come to know that is that whether the amount of energy is going to be absorbed or released. So this has to be written on the right hand side. Alright. Next one is the value of this delta RH, that is the enthalpy of the reaction, is associated with the direction of the reaction or a direction of the equation. What does it mean is that if the direction is reversed, if the direction is what? Reversed, then the value of the enthalpy of the reaction changes. And how does it changes is, that is the magnitude remains the same, only the sign changes. Okay, only what? The sign changes. That means if the forward reaction is endothermic, then if I change the direction, it will become backward. So the backward reaction will become exothermic. Okay, and vice versa.
ओके यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक है, तो हमें क्या बोला है, पॉजिटिव साइन आएगा, तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा। अगर सपोज फॉरवर्ड नेगेटिव है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो सेम रहेगा। ओके दूसरी बात है कि जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आई टोल्ड यू अबाउट द कोएफिशिएंट्स। ओके जब मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था तो A moles of A reacting with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D। तो ये जो ABCD है, small ABCD, those are nothing but number of moles of the corresponding reactants and products। ओके उस हम कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, और उसका वैल्यू हमें तभी मिलता है जब रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ऑलराइट तो हमें क्या बताना है यहाँ पर कि इफ द कोएफिशिएंट, समझ में आया ना कोएफिशिएंट की बात क्या हो रही है वो। सो द कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर। Okay, the coefficient of obviously the reactants and products are going to be multiplied or divided by any number, then the value of the enthalpy of the reaction also has to be multiplied or divided by the same number। Okay, आई बात समझ में, it has to be what, by the सेम नंबर। यानी अगर सपोज अगर मैं रिएक्शन को फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, ओके अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा एच के वैल्यू को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं किसी वजह से डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अगर मैं पूरे रिएक्शन को 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एंथैल्पी के जो रिएक्शन का जो वैल्यू है डेल्टा एच का, उसको भी मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। सो न केवल मुझे ऑपरेशन सेम रखना होगा, इफ इट इज मल्टीप्लिकेशन तो इधर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया और इधर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, नो। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस सपोज आई से दैट वी हैव अ रिएक्शन लाइक A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C and D moles of D, and delta HR is equal to say X kilojoules per mole। ओके ऐसा मैंने दिया। अब अगर मुझे इस रिएक्शन को सपोज 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 3A of A plus 3 of B of B giving me 3C of C plus 3D of D, तो डेल्टा H is equal to 3X kilojoules per mole। समझ में आया? Okay, I'm multiplying the entire reaction by 3, so delta H also has to be multiplied by 3. Okay, this is what it means. तो ये है दोस्तों about thermochemical equation. So what is thermochemical equation? It's a balanced equation, okay, which specifies the change in the enthalpy, the physical state, as well as the number of moles of the reactants as well as products. अब इसमें guidelines में क्या क्या है कि पहला point is the equation has to be balanced. दूसरा, the physical state of all the reactants and the products has to be mentioned. तीसरा, the value of the enthalpy of the reaction has to be mentioned on the right hand side of the reaction। वैल्यू में 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा साइन which can be either positive or negative। ओके नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, वो एक रिएक्शन के दिशा से जुड़ा हुआ है। अगर दिशा चेंज कर दिया जाए तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में चेंजेस किस प्रकार से होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। राइट, और आखिर में जैसे मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ दैट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यदि हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है किसी भी नंबर से, तो उसी नंबर के साथ उसी तरीके का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हमें करना है विद द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में? ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज क्लियर टू यू ऑल? ओके, वेरी गुड। Now my dear friends, as I given you the guidelines of a thermochemical equation, let me just explain you with the help of a simple example. Okay, example लेंगे हम मीथेन का, CH4, it will be treated with oxygen, as a result of which you get CO2 as well as H2O. Alright, now
if you can just remember the important guidelines is, it's a chemical reaction. So the very first requirement is that reaction has to be what? Balanced. So we'll balance the reaction. CH4 plus O2 giving you CO2 plus H2. So balancing will be, there's one carbon, no problems with that. With the hydrogen there are 4. So I'll make it over here 4. Okay, that's it. It's balanced. Oxygen is going to be 2, the oxygen is going to be 2. Right? The next one is about the physical state. So I need to mention the physical state. Methane is a gas, oxygen is a gas, carbon dioxide is a gas, water I consider it as a liquid. Alright, then the value of delta H. So the delta H value is going to be minus of 890 kilojoules per mole. Alright, so that means it contains the sign and it contains what? The magnitude. Alright, so this is what the prime requirements are. The reaction is balanced. Okay, the physical states are being mentioned. Alright, the delta H value is going to be mentioned. So what is going to be said from this particular equation is, okay, क्या बोला जाएगा अभी बताइए मुझे कि 1 mole of methane is going to combine with 1 mole of oxygen, resulting in the formation of what? 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, and during this reaction, the amount of energy that is being released is 890 kilojoules, and the reaction is exothermic. Alright, this is what we say with respect to this thermochemical equation. Okay, now what are the various categories of these equations that we are going to learn? The first one is, we talk about the standard enthalpy of formation. पहला वाला है वो क्या है? The standard enthalpy of formation. अब standard enthalpy of formation की बात की जाए, so इसका symbol is delta FH और standard इसलिए not. तो कैसे शुरू करेंगे? It is the enthalpy change associated with a reaction when 1 mole of a pure compound in a standard state is formed. Formation, obviously it has to be formed from its own elements in the standard state. यानी इसका मतलब ये होता है न केवल द कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन जिसमें से वो फॉर्म हुआ है, ओके, याद रखिएगा दोस्तों, इट हैज टू बी फॉर्म ओनली फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिस एलिमेंट्स का वो कंपाउंड बना हुआ है उसी एलिमेंट्स में से ये बनना चाहिए और वो एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. Alright, I'll give you an example so that it becomes very clear to you, and that is about say water molecule. Water molecule का आपको formula मालूम है, and that is going to be H2O. तो आपको ये भी मालूम है अच्छी तरीके से, it is made up of 2 elements, hydrogen as well as oxygen. तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल देना चाहिए. ऐसे रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन रिएक्शन बोलेंगे. Alright, so the reaction will be like, it will be H2 plus O2 giving you H2O. ओके, अब H2O स्टैंडर्ड स्टेट में गैस है, O2 स्टैंडर्ड स्टेट में गैस है और H2O स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड है दोस्तों. Okay, I heat that liquid and I convert it into a gaseous state. I cool that liquid and gets converted into a solid state. But actually it is existing in a liquid state. So physical states have been mentioned. Now coming back to the balancing of the reaction. So the balancing of the reaction will be, I balance it in this way. H2 plus half O2 gives you what? H2O. Now you'll say, why is it so? Why shouldn't I do it like 2H2O and I make it 2 over here? The simple reason is, my dear friends, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, सो दिस हैज टू बी व्हाट? 1 मोल. ये बात याद रखिएगा. इसलिए बैलेंसिंग के दौरान ये बात को जरूर भूलना मत कि जो भी कंपाउंड बन रहा है that has to be in 1 mole. All the other species I need to balance it accordingly. Okay, and for that case, if there is a fraction, it's allowed. Am I clear? Next thing is, अब क्या और missing है? Delta H is going to be equal to minus of 286 kilojoules. Alright, so that means क्या बोलेंगे अभी इसको? कि when 1 mole of gaseous hydrogen combines with half mole of gaseous oxygen, it gives you 1 mole of water. And the energy which is going to be liberated during this particular process is going to be 286
kilojoules. And therefore we say that the enthalpy of formation of water is going to be this much. So enthalpy, this is standard. So standard enthalpy of formation of water will be equal to minus of 286 kilojoules per mole. Understood this? Similarly, if I have a reaction like this, C plus 2H2 gives you CH4. Okay, this is gas. Delta H is equal to minus of 74.8 kilojoules. Okay, this carbon is a solid and generally it is graphite. This hydrogen is a gas. So you can see over here formation of methane is taking place. Methane कौन सा एलिमेंट का बना है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है. ओके, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या मिलेगा हमें? मीथेन. और इस प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी लिबरेट हुआ है? 74.8 kilojoules of energy is liberated, and therefore we say the enthalpy of formation of methane is minus 74.8 kilojoules. Alright? अब सुने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना चाहता हूँ इस रिएक्शन के नजरिए से कि ये रिएक्शन जो है वाकई में लेबोरेटरी में ही को नॉट प्रिपेयर दिस वे कि ग्राफाइट और हाइड्रोजन मिक्स कर दिया एंड यू गेट मीथेन. नो. Okay, so ये जो value है that is minus of 74.8, it's nothing but it's a value of a hypothetical reaction. Hypothetical reaction मतलब क्या? The reaction which is only possible on paper. Okay, laboratory में this it is not being prepared in this way. So please be very clear about this. Okay, तो I guess आप लोग को ये standard enthalpy of formation का concept अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उसका definition, and you need to explain it with certain examples. At least one or two examples has to be given for this purpose so that the concept becomes very clear. बोलो समझ में आ गया आप लोग को ये? Alright. Okay, my dear friends. Now one more thing which I want you to understand over here, and that is that from the standard enthalpy of formation, it is possible to calculate the standard enthalpy of the reaction. Now point number one is, always remember that the enthalpy of formation of the elements is always equal to 0. Now what does it mean is, say for example I am going to talk about hydrogen, or if I say enthalpy of formation of oxygen, or I say the enthalpy of formation of carbon, so the values of them are going to be what? 0. Okay, that is to be kept in mind. Point number two, that is the enthalpy of formation of any compound, standard enthalpy, is equal to the standard enthalpy of the reaction of that particular compound. Okay, this is like A moles of A combines with say B moles of B, and it is going to give you C moles of C and D moles of D. So if I want to go for the enthalpy of the reaction, I will write it down as what? Okay, it is A of enthalpy of A. I'm so sorry, we need to start for the products. So we have C of HC plus D of HD. This is standard enthalpy, minus of A into HA, B of HB. Okay, so it is products minus reactants. Understood? Now the same thing can be given over here in this way, and that is the enthalpy of formation of this will be nothing but C of HF C naught plus D of HF D naught minus of A of HF A naught plus B of HF B naught. समझ में आया आप लोगों को? So enthalpy of the reaction is equal to the enthalpy of formation of these constituent elements. Alright, and as a result of which we can determine. So both of them are same. So from the enthalpy of the formation, if you know the enthalpy of the formation of each and every reactants as well as products, then it is possible for us to find out the enthalpy of that particular reaction, because both the values are going to be what? Same.
Okay, and if any element is going to be in the standard state and it is going to be in the elemental state, then we consider that the enthalpy of formation to be what? 0. And I give you some example, and that is in a reaction if there is H2 or there is O2 or it's carbon, okay, something like that, F2 or Cl2, then I consider it as what? 0. Unless and until it is not being combined with any other element, and if it is only singular, if it is in the isolated state, then I call that particular value as 0, and hence it has to be what? Ignored. Am I clear with this? So this is the way we need to calculate the enthalpy of the reaction from the enthalpy of formation. Okay? Very good. Now my dear friends, after we have understood very clearly about the standard enthalpy of formation, we move to the second reaction, that is the standard enthalpy of combustion. Okay, what it is? Standard, you know the meaning of this standard very well, yes? The standard enthalpy of combustion. Combustion, my dear friends, is nothing but heating in presence of oxygen. And whenever a substance is being heated in presence of oxygen, obviously it is going to be what? What it will be? Oxidize होगा क्या reduce होगा? जी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आप क्या बोल रहे हो? Oxidize होगा. So whenever a substance is reacting with oxygen, उसका oxidation होगा. और उस दौरान जो change in enthalpy होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Standard enthalpy of combustion. So how to define it is the enthalpy change accompanying a reaction or associated with a reaction when 1 mole of a substance is completely oxidized. Okay, it has to be what? Completely oxidized. और ये क्या है दूसरा? 1 mole of a substance. Completely oxidized का मतलब ये होता है दोस्तों कि whenever एक एलिमेंट है उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एक कंपाउंड बनाया, अब वो जो कंपाउंड बनता है वो वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा. लेकिन अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ वापस से ट्रीट किया जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स अ इनकम्प्लीट कंबशन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंप्लीट कंबशन. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन ट्राइऑक्साइड नहीं बनता है. ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन. ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. ओके, एंड दैट इज आई कंसीडर C plus O2 and it's going to give you CO2. Okay, this is one reaction. Simple reaction है. इसमें हमें कोई बैलेंसिंग नहीं करना है. Delta H naught C will be equal to minus of 393.5 kilojoules. उसी तरीके से suppose if I'm going to take acetylene C2H2 plus O2, it is going to give you CO2 plus H2O. Okay, acetylene is a gas, oxygen is a gas, carbon dioxide gas, water is a liquid. Now we need to balance the reaction. Okay, now when you balance the reaction, it will be like, let's start balancing in this way and then let's see how it is going to be meeting with the requirements of this reaction. दो कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग ने 2 कार्बन कर दिया है, 2 हाइड्रोजन, इट्स एसिड. अब क्या यहाँ पर हो रहा है? 4 ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर 5 है. ओके, इधर 2 ही है. तो अभी क्या करेंगे? अभी टोटल वी हैव 5 ऑक्सीजन, हियर वी हैव गॉट 2 ऑक्सीजन. सो द सिंपलेस्ट वे व्हाट वी डू इज वी जस्ट मेक इट एज 5/2. सो दिस 2 and 2 gets cancelled, we get about 5. Okay, now I guess you can recollect why did I make this as a fraction. याद आ रहा? Yes, देखो अंडरलाइन किया, 1 mole of a substance is completely oxidized. यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? एसिटिलीन. ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के दौरान दोस्तों याद रखिएगा कि द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, मतलब व्हिच इज देयर ऑन द प्रोडक्ट, उसके ऊपर नजर रखना है. दैट हैज टू बी 1 मोल. लेकिन यहाँ पर जब हम कंबशन की बात कर रहे हैं तो जो कंपाउंड का कंबशन हो रहा है, मतलब वो रिएक्टेंट में है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, वो 1 मोल होना चाहिए. और उस तरीके से बाकी के सारे स्पीशीज को आप बैलेंस कीजिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस is being allowed. Okay, and then the value for this I'll tell you, and that is
1000 minus of 1300 kilojoules. ओके अब एक और बात बताना चाहता हूं, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक. ओके ऑल कंबशन रिएक्शंस आर व्हाट एक्सोथर्मिक, क्योंकि दोस्तों द रिएक्टिविटी इज वेरी हाई. अब रिएक्टिविटी जल्दी होता है तो प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा. अब प्रोडक्ट जल्दी मिला तो प्रोडक्ट स्टेबल है. और मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि वो रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट स्टेबल है वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और इसलिए यहां पर ये रिएक्शंस क्या एक्सोथर्मिक है. कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था N2 + O2 गिव्स यू NO. याद है मैंने पढ़ाया था, उसका डेल्टा H वैल्यू याद आ रहा है आप लोगों को, वो पॉजिटिव में था 66.4. ओके तो वो भी एक कंबशन रिएक्शन है. किसका? नाइट्रोजन का. ओके लेकिन नाइट्रोजन की कंबशन रिएक्शन में एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड रादर देन एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड. और उसकी वजह यह है दोस्तों कि दो नाइट्रोजन के बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन बॉन्ड होते हैं. सो देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, and therefore to break those triple bond obviously energy has to be supplied. इसलिए वहां पर नाइट्रोजन का कंबशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वरना मेजॉरिटी ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. ओके ये दोस्तों ये याद रखिएगा. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट वेरी वेल. यस ओके we now move on to the next concept. The next concept is called as bond enthalpy. What is it called as? Bond enthalpy. Okay, now how to define this bond enthalpy is, it is the change in the enthalpy when we are going to consider the breaking of a particular covalent bond of a gaseous molecule resulting in the formation of gaseous atoms. Okay, the change in the enthalpy associated during breaking of a particular covalent bond in a gaseous molecule resulting in the formation of what? Gaseous atoms. दोस्तों ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि जब हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटम्स मिलेगा. गैसेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि थर्मोडायनामिकली इट इज गोइंग टू बी मच मोर फेवरेबल व्हेनेवर वी कंसीडर गैसियस स्टेट, क्योंकि वहां पर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट and therefore the amount of energy which is required to break those weak force of attraction is less, and therefore it is going to be thermodynamically stable. समझ में आया आप लोग को? So this is what bond enthalpy is. मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, and that is, let's say hydrogen gas in the gaseous state में ये है of course there is a particular covalent bond, उसको हमें ब्रेक करना है तो हमें मिलेगा 2 hydrogen gaseous atoms. And the value that we get is plus 436.4 kilojoules. Similarly, if I'm going to talk about HCl gas, it is going to give me H plus Cl. Okay, this is all dissociation reaction taking place, and the value is plus 431.9 kilojoules. Okay, so this is the bond enthalpy. This is the amount of energy which is to be required to break this specific covalent bond. यहाँ पर भी this is the amount of energy which is required to break this particular covalent bond. Alright? Now, the question, my dear friends, is, okay, if you are going to consider a diatomic simple molecule, okay, diatomic simple molecule मतलब एक ऐसा molecule जहाँ पर कम से कम bond है, और कम से कम bond का मतलब होता है दोस्तों एक bond. Okay, अगर bond है ही नहीं तो molecule हो ही नहीं सकता. Okay, तो फिर molecule और gas के बीच में अंतर भी नहीं रहेगा. So minimum there has to be what? One bond. So if I am going to consider a simple diatomic molecule which is containing only one particular bond, so in that particular case what I will want you to understand is that bond enthalpy is equal to the enthalpy of atomization. याद आ रहा है दोस्तों? enthalpy of atomization, उधर भी मैंने वही बोला था कि it is a change in the enthalpy when one mole of gaseous molecule breaks into gaseous atoms. यहाँ पर भी वही है, same है. तो दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल रहेगा कि when the concept is going to be the same, then why there is a requirement to introduce a new concept? Enthalpy of atomization is already being defined before, and if that is equal to that of bond enthalpy, then why there is a requirement to introduce bond enthalpy?
द रीजन इज माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है कि ये दोनों कंसेप्ट सेम तभी होगा व्हेन आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग दे आर ऑल डायटोमिक? दो से ज्यादा एटम्स होंगे ही नहीं, ऐसा जरूरी है? नहीं। Okay, there are many molecules which are stable enough and they contain many atoms, so there will be many bonds. And when there are many bonds, so then we are going to consider this particular concept. So this particular concept comes into relevance when we are going to talk about polyatomic molecules. क्या बात करेंगे हम लोग? Polyatomic molecules, where there are more number of covalent bonds. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज वाटर, H2O gas. Dissociate this. I get 2H in the gaseous state plus oxygen in the gaseous state, and the delta H value for this is 927 kilojoules. यानी इसका मतलब क्या होता है कि H2O में there are 2 OH bonds. मालूम है ना आपको H2O का स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा है, देखो, एंगुलर स्ट्रक्चर है उनका, इट्स नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर. तो देयर आर 2 OH bonds. तो ये दो OH bond को तोड़ने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 927 kilojoules. And as a result of it, that molecule undergoes a complete dissociation, and thereby it gives you a 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Am I clear? लेकिन अगर मुझे पता करना है कि एक पर्टिकुलर को बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड है, बोथ द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी डोंट रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी डिफरेंट. तो वो कैसे पता किया जाए? ये तो पूरा मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए मुझे इतना एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है? ब्रेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर एक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड को मुझे तोड़ना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ओके, हाउ वी नीड टू फाइंड आउट दैट, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू. देखो, एक मॉलिक्यूल में जब भी एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो प्लीज बी क्लियर that the breaking of the bonds doesn't take place simultaneously. ये याद रखिएगा. It always takes place step by step, because thermodynamically the process has to be what? Favorable. Otherwise, large amount of energy is required, and therefore it's not favorable. It's as simple as that. So we are going to consider stepwise dissociation of the molecule. All those molecules where there is going to be more than one bonds. So H2O में there are 2 bonds. So जाहिर सी बात है ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में होगा. स्टेप नंबर 1 में we have H2O. It is going to give you, okay, एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पे. सपोज I show that this bond is broken, so एक H मिलेगा प्लस OH. दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आयंस यहाँ पर जो चार्जेस है वो इग्नोर किया है. नहीं तो आप कोई बोले कि सर ये तो गलत है, हम लोग ने पढ़ा इट इज H प्लस एंड OH माइनस. आई एम इग्नोरिंग द चार्जेस माय डियर फ्रेंड्स. ओके, नाउ द डेल्टा H वैल्यू फॉर दिस इज गोइंग टू बी प्लस 499 kilojoules. ओके, अभी क्या करेंगे? जो सेकेंड बॉन्ड है OH वो डिसोसिएट होगा, इट विल गिव यू H प्लस O, और इसका डेल्टा H वैल्यू इज गोइंग टू बी 428 kilojoules. Okay, this is what we get. Okay, now if we are going to add all these, you will be getting this answer only. See this. Okay, ये OH gets cancelled, तो हमें क्या मिलेगा? H2O giving you 2H plus O. Okay, अब इधर ये ऐड कर देंगे तो डेल्टा H is equal to plus 927 kilojoules. यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डेल्टा मींस व्हाट? इट्स अ स्टेट फंक्शन. वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप, द वैल्यू विल रिमेन द सेम, बिकॉज़ इट इज ओनली कंसर्न्ड विद द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. एम आई क्लियर? तो अभी इस सिचुएशन में मेरे पास 927 kilojoules है, दैट इज फॉर बोथ ब्रेकिंग ऑफ बोथ द बॉन्ड्स. तो फिर एक के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे फिर? यस, द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. वी गो फॉर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. हम किसके लिए बात करेंगे अभी? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ 927 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज गोइंग टू गिव मी 463.5 kilojoules. This is the amount of energy which I require to break one particular covalent bond. Okay, so ये आप समझ में आया कि बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट कभी इंट्रोड्यूस करना है? Yes, when we are going to consider polyatomic molecules which contains more number of covalent bonds. More number मतलब more than one.
अगर एक ही बॉन्ड है in the molecule, then we talk about this particular case, so hydrogen molecule and HCl molecule, तो वहां पर it is similar to that of enthalpy of atomization. लेकिन जहां पर मल्टीपल है देन वी कंसीडर बॉन्ड एंथैल्पी, और उसमें भी हम लोग कौन सा कंसीडर करने वाले, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी वो कंसीडर करेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे. वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड था तो हम लोग ने 2 स्टेप में किया, और इसलिए फाइनल आंसर भी हम लोग ने डिवाइड किया किससे, 2 से. अगर समझो इसकी जगह पर अमोनिया होता, द एंटायर प्रोसेस वुड हैव टेकन प्लेस इन 3 स्टेप्स एंड द वैल्यू वी हैव डिवाइडेड बाय 3. अगर मीथेन होता तो द एंटायर डिसोसिएशन प्रोसेस विल take place in 4 steps, and the final answer what we get has to be divided by what, 4. So that is going to give you the bond enthalpy of one particular bond to be broken. बोलो समझ में आई आप लोगों को? Everybody, the concept is very clear. Fantastic. Now my dear friends, we consider the bond enthalpy of a reaction. Okay, now how we need to consider that? Bond enthalpy of a reaction. And that is, the formula is bond enthalpy of a reaction. I'll just write down as B so it becomes very clear. It is summation of, or if I make it as standard also, because it is a standard state, so it is nothing but the summation of the standard enthalpy of the reactants minus the summation of the standard enthalpy of the products. अब दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा हाईलाइटिंग किया हुआ है मेरे, ताकि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. नॉर्मली क्या होता है, वट एवर आई हैव बीन स्पीकिंग टू सो फार, वेन एवर वी से डेल्टा इट्स चेंज, और चेंज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी फाइनल माइनस इनिशियल. मतलब इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स एक्सेप्ट वन. इस पूरे चैप्टर में दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि wherever it is delta, it is always products minus reactants except one, and that exception अभी आपके नजरों के सामने है, and that is bond enthalpy. Okay, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे दोस्तों. I will be discussing this in the later part of the chapter. तो याद रखिएगा bond enthalpy के ऊपर अगर न्यूमेरिकल आया तो फॉर्मूला ये याद रखिएगा, it is reactant minus products. Okay, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. Let us consider a reaction of hydrogen with iodine in the gaseous state, and it is resulting in the formation of hydrogen iodide in the gaseous state. So the reaction is to be balanced in this way. तो अगर मुझे इसका bond enthalpy के basis पे अगर मुझे उसका फॉर्मूला लिखना है, so I will be writing it down as the bond enthalpy of HI will be equal to the summation of, okay, or forget about the summation part now, we just simply write down as standard enthalpy of H2 plus standard enthalpy of iodine minus of 2 into standard enthalpy of HI. Okay, so this is reactants and this is products. So it's reactants minus products. Okay, ऐसे याद रखना है. Okay, when you go for a numerical one, you will be getting the values of all these bond enthalpies. ये bond enthalpy है दोस्तों, it's not enthalpy of formation. याद रखिएगा दोस्तों, enthalpy of formation अगर होता तो इसका वैल्यू 0 होता, H2 का वैल्यू 0, I2 का वैल्यू 0. याद है ना, मैंने बताया था आपको कि enthalpy of formation of any elements in the isolated state is always going to be what, 0. लेकिन ये बॉन्ड एंथैल्पी है दोस्तों, तो यहाँ पे बॉन्ड है तो उसका एनर्जी होगा, सो देयर विल बी बॉन्ड एंथैल्पी. सो बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ आयोडीन एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HI विल बी प्रोवाइडेड टू यू. तो आपको ऐसे इस फार्मूला में डाल देना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देयरबाय यू गेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HI or of this particular reaction. Sorry, okay, it's not about HI, it's the entire reaction, and that's why the title is bond enthalpy of a reaction. बोलो कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? एवरीबॉडी वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये ग्रेट. माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड एज Haze Law. What is it called as? Haze Law. Now what this law first of all states, that I'll give you the statement of which, and then I'll give you an example, okay, so that you can understand that particular law very well. Now the statement of this law says is that the overall enthalpy change
of a reaction, overall enthalpy change for a reaction is nothing but it is the summation. You know what a summation is? Yes, it's nothing but addition. So it is the summation of the enthalpy changes of the individual steps of that particular reaction. That means what does it mean is a reaction is not necessarily going to be completed in one step. It may take multiple steps. So you're going to add all the individual steps, the enthalpy changes, alright, and once you add all of those, the overall one what you get is the enthalpy of that particular reaction. So in simple words, what I want you to understand is that this concept of enthalpy is nothing but it's a state function. It depends only on the initial state and the final state. Alright, it is not being related at all with the path of the reaction. That means whether the reaction is taking place in one step or multiple steps, the enthalpy change is going to remain what? Constant. This is what is the meaning of this particular statement. Now I'll give you an example so that it becomes very clear to you, and that is we talk about synthesis of ammonia. Now my dear friends, the synthesis of ammonia proceeds by two steps. Alright? The step number one is, okay, and that is, we got nitrogen combining with hydrogen, resulting in the formation of hydrazine, that is N2H4. The delta H for this particular reaction is 95.4 kilojoules. In the second step, the N2H4 once again combines with hydrogen, resulting in the formation of ammonia. The delta H value over here is minus 187.6 kilojoules. Alright, now if you need to balance the reaction, so that means it comes out to be 2NH3. Alright, so N2H4 is hydrazine combining with hydrogen in the second step to give you ammonia. So this is step number one. This is step number two. Now we go into the step number three, and that is what we do is, okay, the overall enthalpy, as it says, enthalpy change of this particular reaction is going to be the summation of the enthalpy changes of these individual steps. So when you are going to carry out the summation of these two individual steps, what happens is the N2H4 and the N2H4 gets cancelled. Alright, so what we get is N2 plus 2H2 and 1H2, so that means it gives you 3H2, giving you 2NH3. Alright, this is what we get. And the delta H value for this is going to be nothing but 1 plus 95.4 and minus 197.6 gives you minus 92.2 kilojoules. You understand? So that means if the reaction takes place in one step, the delta H value will be this. And if you're going to carry out the reaction in two steps, then also the value remains the same. Alright? And that is what is a clear indication that enthalpy change is a state function and it is going to only depend on the initial state as well as the final state. Okay? It is immaterial whether the reaction takes place in one step or whether the reaction takes place in two steps. Alright? Right. Now, we're going to the applications of this. The applications is, the most important application is, it allows algebraic operations to be performed on chemical reactions. Now when I use the word algebraic operations, that means you know very well it's addition, it's subtraction, it's multiplication and it's division. Okay, so here I've done the addition part. Okay, so you can carry out any algebraic operations. Alright, so that can be possible on a chemical reaction. That is the most one of the important applications of Haze Law. The second application of Haze Law is, and that is, it is possible to find out the enthalpy of a reaction which cannot be experimentally determined. Now this is some of the most interesting one, which cannot be experimentally determined. Right, this is the most important word. Okay, many times what happens in an experiment,
when you got multiple reactions taking place, now because we have a feasibility of using algebraic operations, okay, we can add a reaction, we can subtract a reaction, and sometimes what happens is a reaction is going to be there, okay, which actually doesn't take place in the laboratory, okay, but then it is theoretically possible. Now it's very common sense, my dear friend. If a reaction doesn't actually take place in the laboratory, then how are we going to find out the enthalpy of such a reaction? But then due to this Haze law, because it is possible for us to use algebraic operations, there are certain reactions which are theoretical reactions, okay, and those theoretical reactions, the enthalpy of that can be found out, okay, by using the additions and subtraction, whatever operations you do. Because if you remember in a thermochemical equations, I told you that whatever operation that you perform on a chemical reaction, the same thing has to be performed on the value of delta H. Alright, so that means, say for example, I have been carrying out a reaction like A getting converted into B, B is going to be converted into C, C is getting converted into D. Okay, and I got the values like X, Y as well as Z. This is the enthalpy values. And these are the reactions which are actually taking place in the laboratory. Alright, now suppose if I carry out, these are the three reactions, and if I carry out 1 plus 2, suppose. Now if I'm going to carry out 1 plus 2, so that means I'm getting okay, B and B gets cancelled, A gets converted to C. Now this A getting converted into C is nowhere in this particular state. That means it is not taking place in the laboratory. And if it is not taking place in the laboratory, this becomes only hypothetical. And for such a hypothetical reaction, okay, how can I carry out experimental determination? Because experimental determination is to be carried out only for real reactions, not for hypothetical reactions. Then what is to be done? Here the answer is Haze law. Okay, how we have arrived at this particular equation? By the algebraic operation 1 plus 2. So now this reaction is X, this reaction is Y. So accordingly the hypothetical reaction which is there, A getting converted to C, I can find out the delta H value simply by X plus Y. I know the X value, okay, because this is a real equation. I know the Y value because this is a real equation. So when I know X and Y, I can carry out X plus Y, don't you? You understand this? So this is what it says. Enthalpy of a reaction, okay, can be determined, okay, which cannot be experimentally determined on the basis of Haze law. Alright? So I guess with this particular example, you have understood the application as well as far as the Haze law is concerned. Alright?